तो परमिशन नहीं मांगते हैं। Namo Ramana. A very, very warm welcome to all of you for celebration of Advent Day. As most of us would know, it is on this day in 1896 that Bhagwan Raman Maharishi first put his steps in Thiruvannamalai, and he cried out to Lord Arunachala saying, "I have come at your call, Lord. Accept me and do with me as you will." It is that divine day and that divine moment that we all congregate to celebrate together. May I now please request Narayananji, who is at the Ramana Kendra Delhi Shrine, to initiate the puja. Narayananji? Yes, sir. Yes, sir. ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अयमुत्तरसमुत्सर्गोऽस्तु गणन्दो अयमुत्तरसमुत्सर्गोऽस्तु तदेव लग्नं तदीनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे परामि। ओम भो ओम भुव ओम धुव ओम मह ओम जन ओम तव ओम सत्यम ओम तत्सव धर्मवर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आमे ज्योतिषा अमृतं भुवोस्सरः नमोपाता नमस्कार दुर्दशा द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम करिष्यमाणस्य कर्मणा निर्वेदनं प्रसादतं आदौ विघ्नेश पूजां करिष्ये। पृथ्व्यां देवलोके सुबलं चन्द्रवर्मो देवता विद्यान्ता लोकादिकं विष्णुनाथुला वंशचारे मां देवीं त्रिमूर्तिशासनम् आगमार्थं तु देवानां कमनार्थं तु रक्षासां भण्डारं करां यादव देवदवाननाञ्जनम्। नमोपाता नमस्कार दुर्गा चैतमाना परमेश्वर कीर्तन निर्वेद सिद्धम आदौ विघ्नेश पूजां करिष्ये। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदे आनुष्ठुप्सीदादनम् अस्मिन् अर्घ्यामिन्दे महागणपतिं ध्यायामि महागणपतिं आवाहयामि। ओम महागणपतिये नमः शुभं समर्पयामि। ओम महागणपतिये नमः नित्यं समर्पयामि। ओम महागणपतिये नमः पाद्यं समर्पयामि। ओम महागणपतिये नमः स्मन्यं समर्पयामि। ओम महागणपतिये नमः भोगाय समर्पयामि। ओम महागणपतिये नमः स्नानानन्तरं आगमनीयं समर्पयामि। ओम महागणपतिये नमः वस्त्रदानं अक्षदानं समर्पयामि। ओम महागणपतिये नमः विघ्नोऽभिदातं अक्षदां समर्पयामि। ओम महागणपतिये नमः गन्धां धारयामि समर्पयामि। ओम महागणपतिये नमः गन्धोपरि अक्षदां समर्पयामि। ओम महागणपतिये नमः अलंकरणार्थम् अक्षदां समर्पयामि। ओम महागणपतिये नमः हरिद्रा कुंकुमं समर्पयामि। ओम महागणपतिये नमः पुष्पै पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः ओम एकदंताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजगन्नदाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विघ्नाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः
ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम हेरंबाय नमः। ओम स्कंदभूषवाय नमः। ओम सिद्धविनायकरे नमः। ओम शंकरमोक्ष विनायकरे नमः। ओम मातुप्रपणे विनायकरे नमः। ओम महागणपतिये नमः। नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि। धूपार्थं समर्पयामि। दीपार्थं समर्पयामि। अक्षदां समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवसंत कृष्ण सत्यं दोरेण प्रसन्नामि। अमृतत्वं स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम ज्ञानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। महागणपतिये नमः। महागणपतिये नमः। महागणपतिये नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि। अमृतोक्तं सुत्रामसं समर्पयामि। कर्पूरं समर्पयामि। गणानां गणपतिं नमामि। कविनामं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदां महागणपतिये नमः। महागणपतिये नमः। महागणपतिये नमः। कर्पूरं समर्पयामि। नीराजनं समर्पयामि। नीराजनानन्तरम् आसनीयं समर्पयामि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओंकारे स्वाहा 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 समाने स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। महागणपतिये नमः। महागणपतिये नमः। महागणपतिये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति प्रसादं शिरसा प्रणमामि। ओम ओम शिव ओम मह ओम गण ओम तम ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओमाव ज्योतिषमृतपूर्णमस्सर ममोपात समस्त दुर्दश नयद्वारा इन परमेश्वर चित्तम सुबह सोमने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मण नित्य प्राप्ते श्रीवेदे वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतिदिने कलियुगे विदमे वादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे वर्धगण्डे नीरो दक्षिणे पार्श्वे सदाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावावृते प्रभवादिनां तस्य संवत्सराणां मध्ये बिलवनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतु सिंहमासे कृष्णपक्षे दशमी तिथ्यां सुमदितौ सौम्यवासरयुक्तायां आरुद्रा नक्षत्रयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ कर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां दशमी तिथ्यां सुमदितौ मम जन्म पाप जन्म प्रति एतच्चरवयं मध्ये संभावदानं सर्वेषां भावानां सत्य अवनोदनार्थम् अस्माहं सहकुर्माणं क्षेम सत्यल्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यणां अभिवृद्ध्यर्थं समस्त मंगलावर्ध्यर्थं समस्त दुर्दोषशान्त्यर्थं रमणवर्षीय प्रसादेन ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं रमणवर्षीय पूजां करिष्ये सकल मंगल पूजां करिष्ये। विघ्नेश्वरं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि। भवनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समादित्य मूले तत्र सिद्धो ब्रह्मा मातुगुणे मधुसूदन समृद्धा कुशौ तुषाग्रा सर्वे सप्तत्रिवा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो प्रकरणः गंगे से तन्मे तन्मे गोदावरी सरस्वती
नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु अम्बे कैसा कर्मे कस्मात् समाहिता आयातु ध्येयभुजातं दुर्दस्य कारका कंबूरा सागरोत्पन्नो विष्णु विष्णु करे देवे से पूजिते सर्वे पांचजन्य नमोस्तुते देवो देवालय प्रोक्तो जीवो देव स्नानन अंजार निर्माल्यं सोया भवने पूजयेत् ओम सकल गुणात्म शक्ति युक्ताय उग्रात्मने नमः आधार शक्तिये नमः मूल प्रकृतिये नमः आदिवराय नमः आदिगूर्माय नमः अनंताय नमः पृथ्व्यै नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः दशदिक्पालेभ्यो नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः ऋषिर जगत्सावरवाणि संतांसि सकल जगत् स्थिति सम्मारकाणि प्राणशक्ति परा देवता आम बीजम हरि शक्ति रोम कीलकम प्राणप्रतिष्ठापने विनियोग आम अंकुष्टाभ्यां नमः हरि गर्जनीभ्यां नमः रोम मध्यमाभ्यां नमः आम अनादिराभ्यां नमः हरि मनिष्ठाभ्यां नमः रोम कर्णपुष्टाभ्यां नमः आम हृदयाय नमः हरि शिरसे स्वाहा रोम सिदाय वसट आम कौसाय हरि नेत्रदाय वसट रोम मस्तकाय पट पूर्ववस्त्र दिग्बंध ज्ञानम रद्दाम बोधिस्त बोधोलस कर्मसौडकरार्चे आ संबोधन निष्ठुतो मणिमण पंचबाणा विप्राण सुखबालम त्रिणय सिता तिनो सौराज्य देवी बाला दोर्ना बहुसु विपार शक्ति पराग ओम आमरिं क्रोम क्रोम हरिमाम अम्यम रंगम वंशम सम्मह हंस सोम सोम वंश अस्यामुतो देवदृष्टो अस्यामुतो सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्व स्वस्य दिव्या प्राणवाक् पाणिवाद आयुभुस्तानि या कस्ति स्वस्ति सुखं चिरं दृष्टन्तु स्वाहा ओम प्राणप्रतिष्ठापत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषिर्गजि सामधर्वाणि संतांसि सकल जगत् सृष्टिदधि सम्मारकाणि प्राणशक्ति परा देवता आम बीजम हरि शक्ति रोम कीलकम प्राणप्रतिष्ठापने विनियोग आम अंगुष्ठाभ्यां नमः हरि गर्जनीभ्यां नमः रोम मध्यमाभ्यां नमः आम अनादिलाभ्यां नमः हरि मनिष्ठाभ्यां नमः रोम कटपुष्टाभ्यां नमः आम हृदयाय नमः हरि शिरसे स्वाहा रोम सिदाय वसट आम कौसायम हरि नेत्रदाय वसट रोम मस्तकाय पट पूर्व समय दिग्बंध असुनीदे पुनरस्मात् सप्त पुनः प्राणिनी नो देवभोगम जो पश्चिम में सूर्य मुचन में भरे बृहस्पति आवायुदो भव संदानिदो भव सन्निधो भव सन्निधो भव अमगुंडिदो भव सुब्रदो भव सुब्रसन्नो भव सुभो भव वरदो भव प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वामी सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् ध्वम्निभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधं कुरु ओम नमो भगवते श्री कुशेराय नमः ओम नमो भगवते श्री कुबेराय नमः ओम नमो भगवते श्री कुशेराय नमः ओम नमो भगवते श्री कुबेराय नमः ओम नमो भगवते श्री कुशेराय नमः ओम नमो भगवते श्री कुबेराय नमः चतुर्मुखनेन पौलसे परकल्पः लक्ष्मी प्रदक्षिणानंद ईश्वरा I will recite Ramanostotram now. All of you can listen to it. श्री गुरुभ्यो नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अपार शक्ति सुगवारि दाशौर्य शोर्मिमात्रं वनं समस्तं नायदं तं रमणं कबीरं चिन्ताविनीनं निर्दिशिन्नयामि ओम महोसेन जाताय नमः ओम श्री रमणाय नमः ओम गुरवे नमः ओम अखंड संविदागराय नमः ओम बहुजसे नमः ओम कारणोद्भवाय नमः ओम जगद्दावताराय नमः ओम श्रीनारायणाय नमः प्रियोतमसाय नमः ओम सुंदरात्मनवफलाय नमः ओम कमनीय सुचारित्राय नमः ओम सयायवते नमः गुणाभूमीन मानसाय नमः
ओम श्रीमद्भागवतार्थ महाश्रय रक्त विद्योदयाय नमः। ओम महाशक्ति निवारेण प्रवृत्ताय नमः। ओम विदे नमः। ओम गिरिराय नमः। ओम पितृगुणादेशिने नमः। ओम पितृगुणिना पितृपदे नमः। ओम पितृराजैलप्राप्ताय नमः। ओम तपोमयाय नमः। ओम उदासीनाय नमः। ओम महायोगिने नमः। ओम माहुताय नमः। ओम पिताग्रवे नमः। ओम कल्पसंभवाय नमः। ओम सुदुसे नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम स्थिराय नमः। ओम तपस्वीर सर्वंगाय नमः। ओम बुल्लामूल विलोचनाय नमः। ओम चंद्रिका सदास श्रीमंडितानन मंडलाय नमः। ओम सूदवाट्यां समासीनाय नमः। ओम सूर्यगात्र विक्रमाय नमः। ओम विक्रमाय नमः। ओम चिन्मुद्रणे नमः। ओम त्रिगुणाधिकाय नमः। ओम विरूपाक्ष गुहावासाय नमः। ओम विराजन सदाबुद्धिये नमः। ओम विष्णुनाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम दशदासन तांडवाय नमः। ओम गंभीराय नमः। ओम परमस्तार्याय नमः। ओम सुप्रसन्नाय नमः। ओम आर्यपुत्राय नमः। ओम दक्षिणसेवाय नमः। ओम वीराय नमः। ओम दक्षिणाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम महर्षिये नमः। ओम भगवते नमः। विद्याविशारदाय नमः। ओम दीनाय नमः। ओम दीर्घदर्शने नमः। आप्ताय नमः। ओम प्रदर्शकाय नमः। ओम समत्रुसे नमः। ओम सत्यत्रुसे नमः। ओम सत्याय नमः। ओम प्रसादाय नमः। ओम अमृतक्रमाय नमः। ओम सदानंदाय नमः। ओम मृदुवासने नमः। ओम दयान्वय नमः। ओम श्री सोणासुर युरुद्भूत स्कंदाश्रम निकेतनाय नमः। ओम सद्दर्शनोपदेष्टरे नमः। ओम सद्भक्त वृंद बृहत्ताय नमः। ओम गणेश मुनिवृंदेन सेवितां कुशलोरुवाय नमः। ओम गीतोपदेश सारादि ग्रंथ संशीर्ण संशयाय नमः। ओम वर्णाश्रम पदाधीताय नमः। ओम प्रसन्नाय नमः। ओम सौम्याय नमः। ओम आत्मवदे नमः। ओम सर्वावधि मनस्तानां आराध्याय नमः। ओम सर्वसद्गुणे नमः। ओम आत्मारामाय नमः। ओम महाभागाय नमः। ओम मातृमुक्ति विदायकाय नमः। ओम विरदाय नमः। ओम विरुदाय नमः। ओम विप्राय नमः। ओम मुनीन्द्राय नमः। ओम भावोज्वलाय नमः। ओम दर्शनागत सम्माने नमः। ओम मौनेन स्वात्मबोधकाय नमः। ओम ऋचान्तकर्षादित्याय नमः। ओम स्मृणानन्दमोचकाय नमः। ओम अंधस्मिरचण्डांशवे नमः। ओम संसारानन्दतारकाय नमः। ओम सोणादिविष्टरे नमः। ओम आर्तविद्याप्रकाशकाय नमः। ओम अच्युतनिजप्रज्ञाय नमः। ओम नैसर्गिकमहातमसे नमः। ओम कमनिरुद्राय नमः। ओम सुप्रगविवसनाय नमः। ओम भुवाय नमः। ओम दंडवाणिये नमः। ओम कृपापूर्णाय नमः। ओम अवरोगविषक्वराय नमः। ओम स्कंदाय नमः। ओम देवगमाय नमः। ओम अमृतयाय नमः। ओम सेनानिये नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम नमो भगवते श्री अरुणाचल श्री रमणाय नमः। ओम नमो भगवते श्री अरुणाचल श्री रमणाय नमः। ओम नमो भगवते श्री अरुणाचल श्री रमणाय नमः। ओम नमो भगवते श्री काकियाय नमः। ओम नमो भगवते श्री बुल्लाय नमः। ओम नमो भगवते श्री वल्ली देवाय नमः। ओम नमो भगवते श्री सुब्रमण्याय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामीनाथने नमः। ओम नमो भगवते श्री दक्षिणामूर्तिये नमः। ओम नमो भगवते श्री नटराजने नमः। ओम नमो भगवते श्री भैरवरे नमः। ओम नमो भगवते श्री नंदीमहेश्वराय नमः। ओम नमो भगवते श्री शिवपार्वतीये नमः।
हरि ओम 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 ओम नमः शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्रिदलं त्रिगुणावरं त्रिनेत्र सत्यागं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणम्. I will recite Upadesha Saram. Let us all recite together. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Jai Gurave Namaha. Karturagaya Prapade Phalam Karma Jimbaram Karma Gajjadam Kriti Mahatato Padana Karanam Paramasaswadam Gadanirodagam Ishwararpidam Nityayadam Siddhadogadam Muktisadam Kayamangana Karyamuddamam Bhujanam Java Chintanam Krama Jagataishari Yukta Sevanam Ashtamurti Devabhujanam Uddhamastava Uddhamandada Siddhajam Java Jnanamuddhamam Ajyadaraya Sodasasamam Saralachindanam Viraladabaram Vedabhavana Saumamityasa Bhavana Vida Bhavani Mada Bhavasunyasa Bhavasustudi Bhavana Bala Bhakti Uttama Tirustare Mana Svastada Kriya Bhakti Yoga Bodha Chanistitam Vayurodhana Niyate Mana Jala Bhakshiva Bodha Sadhanam Siddhavayava Siddhiyayuda Sagayorvayi Sakti Mulaga Daya Vinasane Ubayarodhane Dayakadambuna Bhavadinomrudam Pranabandana Deenamanasam Yega Chintana Nasamekyaga Nashtamanaso Nishtayogina Vidyamastigim Swastidam Yada Drishyavaridam Siddhamatmana Siddhvadarisanam Tattvadarisanam Manasam Dugim Margane Grude Naiva Manasam Margarjavat Vidyayasvaham Viddimasrida Vidyayo Mano Vidyaham Mana Hamayam Pudo Bhavati Chitpada Aipadatyaham Nija Visaranam Ahaminasava Yamaham Daya Puravira Swayam Paramapurnasa Idamaham Vada Ahamidinake Abhyallasakaya Vikrayendriya Pranadidama Namasekasat Dajjadam Sasat Vavasiga Sitvavedara Saddaya iti Siddhayayaham Isajivayo Veshadivida Satsvabhavado Vastudevaram Veshanada Swatma Darisanam Isa Darisanam Swatma Rubhaka Atma Samsthiti
स्वात्मदर्शनम् आत्मनित्वया आत्मनिष्ठदा ज्ञानवर्जिता अज्ञानहीनति ज्ञानमस्तिदिं ज्ञातुमन्धरम् किं स्वरूपमि आत्मदर्शने अव्यया भवा अपूर्णसि सुगम् बन्धमुक्त्यदि तम्बरं सुगम् विन्दधीयै वस्तु दैविक अहमवेदगम् निजविमानगम् महति तं तवो रमणवागियम् महति तं तवो रमणवागियम् महति तं तवो रमणवागियम्। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते श्रीनाथ श्रीनाय ओम नमो भगवते श्रीनाथ श्रीनाय हरि ओम हरि ओम हरि ओम। Narayananji, thank you. Now, may I please request Dr. Vijay Vencheshwar to explain the significance of Advent Day for Ramana devotees. Dr. Vijay Vencheshwar. Namaskar and Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Namaste to all of you. Today is a very sacred day and it happens to be called the Advent Day. Now, Advent comes from the Christian mythology when people, in fact, welcome or the birth of Christ, the advent of Christ who was doing good for humanity. The name is borrowed. But the thing is, when a great soul comes into this world for the benefit of humanity, it is called the Advent occasion. And then today is the Advent Day because Bhagavan Ramana stepped into Tiruvannamalai today. On this day in 1896, and for 54 years he stayed established with Arunachala. Ramana, as we all know, we have been drawn to him. It's a great fortune for all of us to have been drawn to this great soul. He was always established in the self. In fact, when he left home, he said he left that in accordance with the command of my father, I am going and there is no need to search for me. And the pull was so strong. He had already experienced the self, and he had, as in Sanskrit, experienced ekam eva advityam, which means ekam eva, the Parabrahman is one and only one without a second, and he was already established in that. But we can conclude that it was for the benefit of all of humanity that he came to Tiruvannamalai, continued to spread his grace and give the message of uniting with the real self and not identifying with the false self. So it's important and a great opportunity for us to remember his message of focusing on the real I. And we all in ignorance usually identify with the body because it's force of habit. But it is for us to constantly remember his message that the only one exists, and that is the Parabrahman, the true self. And therefore, what we perhaps need to do, I would imagine, is remember his message, smarana, listen to his teachings, and reinforce the teachings through reflection, that is manana, and hopefully establish ourselves in nididhyasana, as they say, smarana, marana, nididhyasana. And we should constantly, and Ramana was unwavering in the message that it is only one that exists, the others are false. And as we get deluded, we constantly need to remind ourselves of this great teaching of the Master, that there is but one, and the rest is an illusion. And who else but Ramana could explain it so simply so that the message carried to across all levels of society. And today, being September 1, it's a great opportunity for us. And I think it is as this devotees of Ramana to constantly remember his message that the one and only one, the great unmanifest self, remains, and Ramana's teachings should help us, guide us. And may I therefore
pray to Lord Ramana that he give us the strength, the courage, and also the focus to look within and dwell on his teachings and hopefully progress spiritually and develop, which is the true purpose of life, understanding one's true nature. Thank you very much for this opportunity. Om Sri Ramanaya. Thank you, Dr. Mancheshwar. Also, just to briefly remind the devotees, 1st September also happens to be Ramana Kendra Delhi's Foundation Day. So there are 2 occasions for us to celebrate today. May I please now request Mr. Michael James to address the devotees today. Thank you. Namaskaram. Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya. Today I've been asked to talk about Seva as taught by Bhagavan. Bhagavan's ultimate teaching about Seva is expressed by him in verse 29 of Upadeshundya. The verse is Bandhavitatra Parasukumutra Varinda Nile Nitral Undipara Irepani Nitralam Undipara. Pani is a very nice word in Tamil. It very 2 words, very 2 separate verbs. Pani. The one meaning of pani is to sink low or bow down, and therefore it as a noun, pani means to do service or to worship, particularly worship. But worship in the sense of doing service to God. So ire pani means doing service to God. Pani is also a verb that means to speak or say or order. So ire pani can also mean as ordered by God. So there are 2 meanings we can take in this context. But the whole verse is, Bhagavan begins by saying, Bandha Vidatra, devoid of bondage and liberation. Why does he say devoid of bondage and liberation? Because our true state is beyond all dyads, all pairs of opposites, all dvandvas. So bondage and liberation are dvandva. Only if there's bondage can there be liberation. The ultimate truth is there is no bondage and therefore no liberation. That is, when we know what we actually are, we will know we are ever liberated. So Bhagavan says that supreme state is beyond bondage and liberation. So Bandha Vidatra, Parasukam, the supreme bliss beyond bondage and liberation. That is the supreme bliss, that's our own real nature. What we actually are is that supreme bliss. Utravaru means in such a way as to attain or to experience, or in this case, in this context, thereby experiencing. So that's an adverbial clause. The main clause is Indanile nitral, irepani nitral. Indanile means this state. Nitral means standing, or that literal meaning is standing. It implies abiding or being in this state. What is the state he's referring to? Is the state he talks about in the previous verse, in which he says, Tanadil yadu ena tan teri hill pin anadi ananta sat undipara akanda chidananda undipara. That means if one knows what the nature of oneself is, then beginningless, endless, that is, beginningless is anadi, endless, or that ananta means endless, it also means limitless, infinite. Akanda means unbroken, that is indivisible, it implies undivided and indivisible. Sat, Chit, Ananda, existence, awareness, happiness. That is what our real nature is, and that is what alone will remain when we know what our real nature is. So it's this state of Sat, Chit, Ananda Bhagavan is referring to in this verse when he says Indanile, this state. So being or abiding in this state, standing in this state,
of supreme bliss, in this state, thereby experiencing supreme bliss, devoid of bondage and liberation. That is irepani nitra, abiding in the service of God, or being in the service of God. Or we can take it as service, we can take it as worship, or we can take it as subsiding. That is, to the extent to which we subside, to that extent are we truly serving God. What is God? God is nothing but our own real nature. He is just sat, being. Uladu, what that which is. His natural state is just to be. But when we rise as an ego, we give him the work of appearing as Guru, appearing in the form of Bhagavan, to tell us to turn back within, and thereby saving us from ourselves. So we are unnecessarily giving him work to do when we rise as ego. So the state in which we don't rise as ego, the state in which we remain as we are, just being as we actually are, that is the true service of God. This is Bhagavan's final conclusion. So service, true worship is not a doing, but just being what we actually are. And what we actually are is that supreme bliss, which is devoid of both bondage and liberation, devoid of all pairs of opposites, all dualities, all dvandvas. So this is the ultimate teaching of Bhagavan on service. So this is our aim. Our aim is not to do anything, but just to be. As Bhagavan sometimes said, I think it's recorded in talks in one place, Bhagavan says, your duty is not to be this or that. Your duty is just to be. So just being, that is our duty. That is what Bhagavan has enjoined upon us. And how do we just be? Only by this practice of self-attentiveness. That is, the nature of ego is to rise, stand, and flourish by grasping things other than itself. As he says in verse 25 of Uludu Napadu, Urupatri undam, grasping form, it comes into existence. Urupatri nikam, grasping form, it stands. Urupatri undu mika ongum, grasping and feeding on forms, it flourishes abundantly. Uruvittu urupatram, grasping form, leaving form, it grasps form. Tedinal otum pidicum, if sought, it takes flight. What is that it? Uruvatra payahande, the formless phantom ego. So ego has no form of its own, but it cannot come into existence or stand or flourish without grasping form. The first form it grasps is the form of a body consisting of 5 sheaths, which it takes to be itself. And then through the five senses of that body, it grasps forms of the world, the seemingly external world, but is actually just in our own mind. It's just a dream, as Bhagavan says. So since ego is formless, all forms are things other than ego. So what Bhagavan means by grasping form is being aware of or attending to anything other than ourselves. So since this is the nature of ego, ego will subside only to the extent to which it grasps itself. That's why he says, Tedinal otum pidicum, if sought, it takes flight. That is, if ego, instead of attending to other things, if we as ego, instead of attending to other things, turn back to try to attend to ourselves, we seek what we actually are, otum pidicum, it takes flight. Takes flight here is a metaphorical way of saying it will subside and dissolve back into its source. So in order to be as we actually are, we need to investigate ourselves. So the greatest service we can do to God or Bhagavan is to turn our attention within and try to hold fast to self-attentiveness. This is the ultimate teaching of Bhagavan. That is, this is the path of self-investigation and self-surrender. We surrender ourselves, give ourselves wholly to him only by clinging firmly to self-attentiveness. However, the general understanding of seva involves doing something. People think if you're seva means you have to be doing something. Actually, the word seva it is a noun derived from the verb save.
which means to dwell or stay near or in, to remain or stay in, to live in. In other words, it's got that same sense as, of just being. And then secondary meaning is, because it means staying or being, it also means waiting upon or attending upon. In other words, serving. And it's also serving in the sense of also worship. So savor doesn't just mean doing service. It means service in the sense of worship of God. So only whatever we do, only if we are doing that in the spirit of worship of God, but is it true savor in the deeper sense of the term. So, but this is savor at a different level. So when we are thinking about doing, we've already slipped down from that state that Bhagavan says we should stand in, that state of just being as we actually are. That is the most perfect service. However, when we rise as ego, the nature of ego is to let it, the ego's attention is by nature flowing outwards. So when we allow our attention to go outwards, we are under the sway of our vasanas, our Vishaya vasanas. And under the sway of our vasanas, as soon as we allow our attention to go outwards, we get involved in action by mind, speech, and body. So this is how karma starts. But Bhagavan says in verse 2 of Upadesha Undiyar, he says, that is in the first verse, he said that karma giving fruit is only by the ordainment of God. That is, karma doesn't give fruit by itself. It's only God who decides what fruit should be given at what time for which action. So, because action is just is jada, as he says, it's non-aware. So it cannot be God. It cannot. Action cannot decide its own fruit. God alone can decide the fruit, and because He's all loving, He decides when, where, and how we should experience the fruit of each karma in such a way that will be most beneficial for us, spiritually beneficial for us. So when we do any action, the action is done, but the fruit of the action is then out of our hands. It's entirely, it goes and is stored in Sanchita, and it is experienced by us only when God ordains it to be experienced by us. In other words, the old analogy is of shooting an arrow from a bow. Once you've shot the arrow from a bow, you no longer have any control over it. If you've misaimed the arrow, once you've shot it, it's too late to bring it back. So once we've done an action, the fruit is out of our hands. It's in the hands of God, and God alone decides when we should experience action. So, and the actions have two results, two consequences. One is the fruit, the other is the seed. The fruit is Palamasaswatam, as Bhagavan says in the Sanskrit version. The fruit is impermanent, because when we experience the fruit of an action, that action has therefore come to an end. That fruit has therefore come to an end. So Bhagavan begins in Tamil by saying, Vinayam vilevu vilevutru. That is, the fruit of action perishing. That when we experience the fruit of an action, it perishes. But it remains, but though the fruit perishes, the seeds remain, and the seeds are the problem. The seeds are what cause us to fall in the ocean of action. So Bhagavan says, Vittai, as seed, Vinay kadil virtidam, it causes to fall in the ocean of action. So what causes us to fall in the ocean of action is the seeds. Those seeds are vasanas. So vasanas are the problem. The vasanas are the seeds that cause us to fall in the ocean of action. And then he concludes the verse saying, Vidu tarile, it does not give liberation, or it is not giving liberation. That means action can never give liberation. As he says in the Sanskrit version, unfortunately, the Sanskrit version, because he wrote in a shorter meter, he doesn't explicitly refer to seeds. He just says, Kriti mahodado patana karanam. That is the cause for falling in that great ocean of action.
What is that cause? The cause is our vasana, the seeds. Palamasaswatam, the fruit are impermanent. Gati nirodakam, it obstructs liberation. So action is not the means to liberation. It obstructs liberation. It cannot give us liberation. However, in verse 3, he says, he gives a concession. He says, Katanu kakum nishkarmiya karmam karte tirti aktu undipara gativari kambikum undipara. What that means is nishkarmiya karma. That's action done. Karmiya means motivated by desire. So nishkarmiya is action that is not motivated by desire. But why do we act? There's always some motivation for any action. That is, we don't just act for no reason at all. We act for a reason. Generally, our actions are driven by desire. But if we want to do action that are not driven by desire, we need to do it for the love of God. That's why Bhagavan says, Katanukakam, done for God. That implies done for the love of God. In the Malayalam version, because Bhagavan wrote in a slightly longer meter, he was able to put in more words. He says, I think it's Ishwara Pritiyanai. Pritiyanai means for the love of God. So Katanukakam means done for God. It implies done for the love of God. So instead of our actions being motivated by desire for achieving this or that for ourselves, if we do it just for the love of God, that will purify the mind. What will purify the mind here is not the action itself, but the love with which it's done. For example, Ramakrishna Paramahamsa, for example, worshipped Kali. He worshipped Kali with the pure love of a child for its mother. So he worshipped Kali with pure love. There are so many people who worship Kali, but they're worshipping for some aim. They think if we worship Kali, we'll get this benefit or that benefit. So it's not the action that purifies the mind, it's the love with which it's done. If you're worshipping God for the fulfillment of your desires, that's not going to purify your mind. Or it will in a very roundabout way purify the mind, because the more we think of God, the more we depend on God, slowly, we will cease asking God for this and that, and we will come to trust God, for God knows better than I do what is good for me. So there's no need for me to ask God. So in a very indirect way, even Kamiya puja will purify the mind, but that's a very slow and roundabout process. If we truly want to purify the mind, we need to worship God without any desire for without any kamyata, without any desire, without seeking the fulfillment of any desire. We worship Him just for the love of Him. So desireless action done for God, purifying the mind. Gati vari kambikam. It will show the way to liberation. How will it show the way to liberation? Because when Bhagavan says purifying the mind, actually in Tamil he says karate tirati, that means rectifying the mind. It implies purifying the mind. What are the impurities in the mind? The impurities are our vasanas. The vasanas, the vasanas that have a real problem are the Vishaya vasanas. Even the karma vasanas are secondary to Vishaya vasanas, because any karma vasanas means the inclination to act. Why do we have an inclination to act? Only because we've got an inclination to experience some Vishaya. So Vishaya vasanas are the driving force behind the karma vasanas. So if the Vishaya vasanas are the true problem. So the more we cultivate love for God, the more our desire for other things will drop off. Our inclination to attend to other things will come to rely on God, trust in God, and love God more and more. That purifies the mind. And when the mind is purified, it is thereby clarified. And when the mind is clarified, it will recognize that the path to liberation is not any action, it is just
being. We can reach God not by doing anything, but only by being. Because what is God? God is nothing but our own being. The very nature of God is being. God is Ulladu, that which is. God is Sat, being. So the way to reach God is by just being, as Bhagavan indicated in that verse 29. Ultimately, what is our ultimate aim? Just to be in that state of supreme bliss that is our own real nature. But in order to understand that just being is the means to liberation, the mind needs to be purified. And it can be purified by doing action, not for the fulfillment of any desire, but just for the love of God. So here Bhagavan begins to talk about action done without desire for the love of God. What type of actions can we do? We have three instruments of action: mind, speech, and body. So in the next verse, Bhagavan says, Didumidu, this is certain. Pujai japamum dhyanam udal vak ulla toril. Puja, japa, and dhyana are actions of body, speech, and mind. That is, puja, the actions we do for the love of God by body are puja. The actions we do by speech for the love of God are japa. The actions we do by mind for the love of God is dhyana. And then he says, Vevu ahum ondril ondru. That means it literally means one than one is superior. What the implication is, but better than puja is japa, better than japa is dhyana, because the speech is a subtler instrument from the body, and the mind is a subtler instrument from the speech. Always at the subtler level is more powerful. So, and in what sense does he say it's superior? Superior means in the sense of it's more efficacious in purifying the mind. And then he goes on to talk about these three, puja, japa, and dhyana, in the next three verses. In verse 5, he says, Enuru yavum ireyuru amena eni vari padal undipara, isan nal pusane undipara. Worshipping, thinking that all eight forms are forms of God is good worship of God. All the eight forms, the Ashtamurti, this is a concept in Shaiva Siddhanta, but Shiva has 8 forms. These 8 forms are, there's slight variations in how they're enumerated, but basically 5 of the 8 forms are the 5 elements: earth, water, fire, air, and space, and sun, moon, and jivas. That is the basic meaning of the 8 forms. So that basically covers everything. That is, all things are composed. That all material things are composed of the material elements: earth, water, fire, and air. The mental things are composed of the subtle forms of these 5 elements. And there's the sun and the moon. They're physical things, and sentient beings, other jivas. That means human, not only human beings, but also all sentient beings, all animals and devas and all types of all sentient beings, whatever be their form. So we can worship any of these, considering them to be forms of God. That is good worship of God. So there is nowadays, there's a very widespread belief that nishkarmiya karma means doing social service. This is very much an idea that was, this idea, I think to a large extent, it was spawned by Swami Vivekananda, which he did in a certain context, and that's good at its own level. But nishkarmiya karma means much more than doing social service. If we understand it in the sense of this verse, that is social service we're doing by body. Because one of the 8 forms is jivas, whatever service we do to jivas, if we take those, jivas means whether they're human or non-human jivas, if we take them to be forms of God,
and we serve them accordingly, that is a good worship of God. So there is room for this, but it's not the main meaning of nishkarmiya karma. And that's by body. The deeper type of nishkarmiya karma is the japa that we do with love. So this is what Bhagavan talks about in the next verse, verse 6. He says, rather than praising, that means rather than singing stotras, japa is good. It's the implication that this is an extremely Bhagavan has packed a lot into this verse in very few words. The verse is Varitalil Varitilil Vaikucha Vaikul Japatil Virupamam Manadam Undipara Vilambum Dhyanam Idundipara. So what that, if we translate it literally, it means rather than praising in a loud voice, rather than japa within the mouth, what is done by mind is beneficial. This is called dhyana. We have to flesh it out a bit to understand the implied meaning. What it means is, rather than praising God by singing stotras or whatever, japa is beneficial. Rather than japa done in a loud voice, japa done softly within the mouth is beneficial. And rather than japa done softly within the mouth, mental japa is beneficial. Beneficial here again means it's more efficacious in purifying the mind. That's what Bhagavan means by beneficial. Because here the whole subject of these verses is about purification of the mind. That's the purpose of doing any nishkarmiya karma for the love of God. The aim is the purification of the mind. So more purifying than singing loud stotras is doing japa. More purifying than doing japa in a loud voice is japa done softly within the mouth. More efficacious than japa done softly within the mouth is mental japa. And mental japa is a form of dhyana. And then so these are all nishkarmiya karmas. So nishkarmiya karma isn't just going out to save the world. The spiritual practice we do is the nishkarmiya karma. And then in verse 7, he talks about the dhyana. He says, Vitu karatilin arune vichipol, vittida dunnale undipara, visejdamam unnave undipara. That means rather than meditating leavingly, in other words, rather than interrupted meditation, certainly meditating unleavingly, that is uninterruptedly, like a river or the falling of ghee. Just as a river or a stream of that, if you're pouring ghee, it flows without a break. It doesn't go drip, drip, drip. It's a steady flow. Like a river is a steady flow. So meditation, if it's such steady, uninterrupted meditation, that is superior. Why is it superior? Because if we are meditating on God, either on a name or form of God, if our meditation is often interrupted by other thoughts, what does that indicate? It indicates that we're more interested in the other things we're thinking about rather than God. If our meditation on God is constant, that shows the love that we have for God. So the constant meditation is more efficacious or is superior, is more efficacious in purifying the mind because it's done with greater love. That is so again here, what Bhagavan implies here is that the love is the key, right? When the love is there, we will keep our mind fixed on God. If our mind is wandering here and there, keeps on going away towards other things, that indicates our love is still lacking. We have some love for God, but it's not yet sufficient. Here, up to this point, Bhagavan has been talking about karma, about nishkarmiya karma, actions that we can do for the love of God by body, speech, and mind. But the most important verse in this series is the 8th verse,
because in the 8th verse, what Bhagavan says is, Anya bhavatin avanahamahum ananya bhavame undipara anatinum utumum undipara. Rather than anya bhava, that's anya bhava, anya means what is other. So anya bhava means meditating on God as something other than oneself. That's the implication. So rather than meditating on God as something other than oneself, certainly ananya bhava means meditation on what is not other. In other words, meditation on oneself, avanahamahum, in which he is I. So when we understand God is not something other than ourselves, God is that which is shining in our heart as I, when we consequently meditate on nothing other than I, anatinam uttamam, that is the best among all. And what Bhagavan refers to here as ananya bhava is another way of describing the practice of self-attentiveness. That is, when by following the path of bhakti, we finally our mind is purified to the extent that we understand that God is not anything other than ourselves. God is that which is shining in our heart as I. When we come to understand that and our attention turns within, that is best among all. It's best among all in the sense that it's most purifying of all the practices we can do. But attending to other things is an action, because when we attend to something else, our attention is going away from ourselves towards some other thing. Whereas attending to ananya bhava, attending nothing other than ourselves, our attention is not moving anywhere, it's resting in its source. So ananya bhava or atma vichara is not a doing but a being. That is what Bhagavan indicates in the next verse, verse 9. Verse 9, he starts by saying, bhava balatina, by the strength of meditation. The meditation he's referring to here is the ananya bhava that he spoke about in the previous verse. So by the strength of so the ananya bhava means self-attentiveness. So the implication here, what Bhagavan implies by bhava balatina, is by the strength of a firmness, the intensity of a stability of our self-attentiveness, our ananya bhava. Bhava balatina, bhavanatita sat bhava tirutale undipara, parabhakti tattva mundipara. By the strength of such meditation, of self-attentiveness, being in sat bhava. Sat bhava means the state of just being. Bhavanatita, which transcends all bhavana. Bhavana here means meditation in the sense of thinking or imagining, or that meditation on anything other than ourselves is what is referred to here as bhavana. So meditation that involves activity of the mind. So being in sat bhava is not an activity of the mind, it's a state of just being. And how do we achieve that state of just being? That is by the strength of this meditation, of self-attentiveness. And Bhagavan says, that alone is parabhakti tattva. This verse 9 connects us back to verse 29, in which he says, just being in this state, which transcends of this state, thereby experiencing supreme bliss that transcends bondage and liberation, that is abiding in the service of God. That abiding in the service of God is what he refers to here as parabhakti tattva. This is the nature or reality or true state of supreme devotion. So what is this supreme devotion? By the strength of self-attentiveness, in other words, by the strength of our self-investigation, just being as we are, that is the supreme devotion. So this is the true service that Bhagavan has enjoined upon us. So this isn't to say the other actions are wrong. Nishkarmiya karma is very good, but it's a roundabout way, and it's just a means to come to this. Ultimately, our aim is just to turn our attention within and thereby be as we actually are. That is achieved that by our self-attentiveness, we remain as we actually are, and that is the true service to God. Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya.
Mr. Michael James, thank you so much. It was again a wonderful occasion to hear your guidance. If you will all Bhagavan's guidance, not my guidance. Absolutely. I've just been talking about what Bhagavan has told us. I don't have anything to say of my own. Absolutely, sir. We will proceed with the bhajans. If you just give me one moment, I will put on the video file. Let me just also share with you a brief background about our young singers this evening. We have two singers, Harshini Rajesh and Shivani Rajesh. They will be rendering Ganesh Pancharatnam, a song on Sharda Amba and Shiva Shtkam. I will just upload the videos. मुदाकरात् मोदकं सदा साधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भगैत्यकं नटाशुभाषनाशकं नमामिदं विनायकम् नमामिदं विनायकम् न चेतरातिभीकरं नवोदितार्थभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जनं नटाधिकापदुद्धरं न चेतरातिभीकरं नवोदितार्थभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जनं नटाधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निरीश्वरं रजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं समाश्रये परात्परं निरन्तरम् परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यपूजनं दरेदरोदरं वरं वरे भवक्तमक्षरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यपूजनं दरेदरोदरं वरं वरे भवक्तमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमाचलं चिरन्तनोतिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् अकिञ्चनातिमाचलं चिरन्तनोतिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् भजे पुराणवारणम् नितान्तिकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मज अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं नितान्तिकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मज अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदङ्करे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनं तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् विचिन्तयामि सन्ततम् सदा जनान् चारणान्
करुणानिधे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गलेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालं जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशिष्य शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे मुदामातरं मण्डलं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषादरन्तम् अनादिं यपालं महामोहहारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे वडाधोनिवासं महाताट्टहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशं गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्धदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा सन्नयेहं परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्विद्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं कलाभ्यां दधानं पदाम्भोजनं प्रायकामं ददानं परिवर्तयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शरच्चन्द्रगात्रं गुणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं गणेशस्य मित्रम् अपर्णाकलत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारं श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्वयं यः प्रभाते नरशूलपाणि पठे स्तोत्ररत्नं गृहे प्राप्य रत्नम् सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कलत्रं विचित्रे समाराध्य मोक्षं प्रयाति नमस्कार. नमो रमण. तरुणारुणमणि किरणावलि நிகதருமக்ஷரமணமகிழ்மாலை திருநாடிய திரையடியா திருமணம் தெளிய பரவுதல் பொருளாக கருணாகரமுனி ரமணாரியன் உவகையினால் சொல்லியது கதியாக அருணாச்சலமென அகமே அறிவோடுமாழ்வார் சிவனுலக ஆழ்வாரே. அருணாச்சலவதற்கு ஏற்ற அக்ஷரமணமாலை சாற்ற கருணாகர கணபதியே அறம் அருளிக்க அருணாச்சலவதற்கு ஏற்ற அக்ஷரமணமாலை சாற்ற கருணாகர கணபதியே கரமருளே காப்பாய். அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சலமென அகமே நினைப்பவர் அகத்தை பெறருப்பாய் அருணாச்சலா
அழகு சுந்தரம் போலகமும் நீயும் முற்று அபிநமாயிருப்போம் அருணாச்சலா அக புகுந்தீர்கள் அககுகை சிறையாய மறித்ததில் கொள் அருணாச்சலா ஆரேக்க என்னை ஆண்டென்னை அகற்றிடில் அகிலம் படித்திடும் அருணாச்சலா இப்பழி கப்புனையின் இனியார் விடுவார் அருணாச்சலா ஏன்றிடுமல்லையின் பெரிதருள் புரிவோர் இதுவோ உணதருள் அருணாச்சலா மாற்றி ஓடாதுளத்தின் மேல் உச்சியாயிருப்பாய் அருணாச்சலா ஓசுழமிடதுனை கண்டடங்கிட உன்னழகை காட்டருணாச்சலா என்னை அழித்தி போதெனை கலவாவிடில் இதுவோ ஆண்மை அருணாச்சலா ஏன் இந்த உலகம் என்னை பிறரிழுக்க இது உனகழகோ அருணாச்சலா ஐபுல கழ்வர் அகத்தினில் புகும்போது அகத்தில் நீலையோ அருணாச்சலா ஒருவனமுன்னை ஒளித்தியவர் வருவாரும் சூதே அருணாச்சலா ஓங்கார பொருள் ஒப்புயர்வில் நோய் உனையார் அறிவார் அருணாச்சலா ஔவை புலனுக்குள் அருளை தந்தனை ஆளுவதும் கடன் அருணாச்சலா கண்ணுக்கு கண்ணாய் கண்ணின்றி காண் உன்னை காணுவதேவர் பார் அருணாச்சலா காதம் இரும்பு போல் கவர்ந்தனை விடாமல் கலந்து நொடி ரூபாய் அருணாச்சலா இது உருவாகிய கிருபை கடலே கிருபை கூர்ந்தருளாய் அருணாச்சலா கீழ்மேலெங்கும் கிளர்வொளி மணியல் கீழ்மையை பாஷை அருணாச்சலா முற்றமுற்றறுத்தனை குணமாய் பணித்தாள் உருவாய் ஒளிரருணாச்சலா பூவாட்கண்ணிய கொடுமையில் படாதருள் கூந்தனை சார்ந்தருள் அருணாச்சலா எங்கியும் வஞ்சியாய் கொஞ்சமும் இறங்கிலை அஞ்சலின் அருள் அருணாச்சலா கேளாதளிக்கும் உன் கேடில் புகழை கேடு செய்யாதருள் அருணாச்சலா கையினில் கனி உண்மை ரசம் கொள்ளுவதை பெரிகொள அருள் அருணாச்சலா கொடியிட்டு அடியரை கொல் உனை கட்டி கொண்டெங்கன் வாழ்வேன் அருணாச்சலா கோபமில் குணத்தோய் குறியாயனை கொள்ள குறையல் செய்தேன் அருணாச்சலா கௌதமர் போற்றும் கருணை மமழையே கடை கணி தாழ்வாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா சகலமும் விழுங்கும் கதிர் ஒளியின் மன சலசமலத்தியிடே அருணாச்சலா சாப்பாடுனை சாதுணவாயான் சாதமாய் போவன் அருணாச்சலா சித்தம் குளிர கதிரத்தமை தமுத வாயை திரகருள் மதி அருணாச்சலா சீரை அடித்து நிர்வாணமாய் செய்தருள் சீரையழித்தருள் அருணாச்சலா சுக கடல் பொங்க சொல் உணர்வடங்க சும்மா பொழிந்திட அருணாச்சலா சூதை செய்தலை சோதி அதினிவுள் ஜோதி குரு காட்டருணாச்சலா செப்படி வித்தை கற்று இப்படி மயக்க விட்டு
ஒருபடு வித்தை காட்டருணாச்சலா சேராயனில் மெய் நீரால் முழுகி கணீரால் கழிவேனருணாச்சலா செய்யன கள்ளில் செய்வினை சுடுமலர் உய்வகையேருடையருணாச்சலா சொல்லாது சொல்லினி சொல்லனில் என்று சும்மா இருந்தாய் அருணாச்சலா சோபியாய் சும்மா சுகமுண்டு உறங்கிடில் சொல்வேன் என்கிய அருணாச்சலா சௌரியம் காட்டினை சழகற்றதே சலியாதிருந்தாய் அருணாச்சலா யமலியில் கேடா நான் என் உறுதியால் நாடி நின்று குருவேன் அருணாச்சலா ஞானமில்லாதும் ஆசையம் தளபர ஞானத்தெனே தருள் அருணாச்சலா நிமிரு போல் நீயும் பல நிலையில் நிலையன் அருணாச்சலா தத்துவம் தெரியாதனை மூன்றாய் தத்துவம் இது என் அருணாச்சலா தானே தானே தத்துவம் இதனை தானே காட்டுவாய் அருணாச்சலா இருந்தியகனை தினமக கழ்கான் தெரியும் என் அருணாச்சலா நீரமிலகத்தில் தேடி முந்தனையான் திரும்ப புற்றேன் அருணாச்சலா பரிவில்லா இருப்பிடப்பில் பயன் ஒப்பிடவாயேன் அருணாச்சலா தூய் மனமொழியார் தோயும் உண்மையகம் தோயவே அருளென் அருணாச்சலா தெய்வமெருளை சாதவியலை சேர ஒழித்தாய் அருணாச்சலா கேடாதுற்றனல் திருவருள் நிதி அகத்திய கந்தி தருள் அருணாச்சலா தைரியமோடு முன்மையகம் நாடையான் தட்டழிவேன் அருள் அருணாச்சலா தொட்டு அருட்கைமை கட்டியாயனில் ஆனட்டமாவேன் அருணாச்சலா கோபமில் நீ அகத்தோடொன்றியன்றும் சந்தோடமொன்றிடகருள் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ கருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா நகையிடமில்லை நின்னாடிய என்னை அருள் நகையிட்டு பாணி அருணாச்சலா நானிலை நாட நானாய் ஒன்றினி காணுவனில் அருணாச்சலா இன்னெறியறிகனை நீராகிடுமுள் இன்னருள் மழை பொழி அருணாச்சலா நீ நானர புலி நிறம் கழிமயமானில் நிலை அருள் அருணாச்சலா துரு உனையான் பின்னுரு நள்ளிடையெழும் என்று அருணாச்சலா நூலறிவறியா பேதையர்கள் மாலறிவருகருள் அருணாச்சலா திக்கு குருதியால் புக்கிட உனை புகழ் நகனானில் அருணாச்சலா நேசமிலனுக்குள் ஓசையை காட்டி நீ மோசம் செய்யாதருணாச்சலா இந்தழிகனியால் நலநிலை பதத்தில் நாடி உட்கொள் நலமருணாச்சலா நொந்திடாதுந்தனை தந்தனை கொண்டிலை அந்தகல் நீ எனக்கு அருணாச்சலா ஓக்கிய கருதிமை காக்கிய பக்குவமாக்கி நீ ஆண்டருள் அருணாச்சலா
பற்றி மானிடம் தலையுற்று மனமருள் பற்றிடருள் புரியருணாச்சலா பார்த்தருள் மால் அலப்பாத்தினையனின் அருள் பார் உனக்கா சொல்வர் அருணாச்சலா பித்து விட்டு உனை நேர்பித்தனையாகினை அருள் பித்தம் தெளி மருந்து அருணாச்சலா பேதியில் உன்னை சேர் பேதியில் என்னை சேர் பேதி முந்தனக்கே அருணாச்சலா புல்லறிவே துரை நல்லறிவே துரை புல்லிடவே அருள் அருணாச்சலா மனம் மாமனம் பூரண மனம் கொள்ள பூரண மனம் அருள் அருணாச்சலா பெயர் நினைத்திடவே பிடித்திடுகனை உள் பெருமையார் அறிவார் அருணாச்சலா ஏத்தனம் விட விட பேயாய் பிடித்தனை பேயனாக்கினையில் அருணாச்சலா பைகொடியானார் பற்றின்றி வாழாமல் பற்று கொடாய் அருணாச்சலா மயக்கியன் போதத்தை பறித்துன் போதத்தை காட்டினை அருணாச்சலா போக்கும் வரவுமில் பொது வெளியினில் அருள் போராட்டம் காட்ட அருணாச்சலா பௌதிகமாமுடல் பற்று நாளும் பொன் பவிசு கண்டுர அருள் அருணாச்சலா மலை மருந்திட நீ மலை திடவோ அருள் மலை மருந்தாய் ஒளிர் அருணாச்சலா மானம் கொண்டு தூபவர் மானத்தை அழித்தே அபிமானம் இல்லாதொழிர் அருணாச்சலா மிஞ்சிடில் கெஞ்சிடும் கொஞ்ச அறிவல் யான் வங்கியாதருளினை அருணாச்சலா நீக்காமல் இல்லாமல் வாகாற்று அலை கலமாகாமல் காத்தருள் அருணாச்சலா முடியடி காணா முடிவிடுத்தனை நேர் மூடிவிட கடனிலை அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா மூக்கிலன் முன் காட்டும் முகுர மகாதனை தூக்கியனை கருள் அருணாச்சலா மேயகத்தின் மனமென் மலரணையில் நாமே கலந்திட அருள் அருணாச்சலா மேன்மேல் தாழ்ந்திடும் மெல்லிய சேர்ந்து நீ மேன்மை உற்றனையன் அருணாச்சலா மேன்மையல் தீர்த்தருள் மேலினால் உனதுண்மை வசமாக்கினை அருணாச்சலா மொட்டையடித்தனை வெட்ட வெளியில் நீ நட்டமாடினையன் அருணாச்சலா மோகம் தவித்து மோகமனை துமென் மோகம் தீராயன் அருணாச்சலா மௌனியாய் கல் போல் மலராதிருந்தால் மௌனமிதாமோ அருணாச்சலா எவனின் வாயில் மண்ணினை கட்டி என் பிழை படிப்பது அருணாச்சலா யாரும் அறியார் என் மதியினை மருட்டி எவர் கொள்ளை கொண்டது அருணாச்சலா ரமணின்றி உரைத்தேன் மோசம் கொள்ளாதெனை ரமித்திட செய்யவா அருணாச்சலா ராப்பகலில்லா வெறி வீட்டில் ரமித்திடுவோம் வாருணாச்சலா லட்சியவை தருள் அஸ்திரமிட்டனை பட்சித்தான் பிராணனோடு அருணாச்சலா லாபம் நீக்க பரலாபமில்லையனை குற்ற லாபமென் உச்சனை அருணாச்சலா வரும்படி
சொல்லிலை வந்து படியளவருந்திடு உங்களை விதிகள் செல்லா வாழ்வென்று அகம்புக்குள் வாழ்வருளன்றே என் வாழ்விழந்தேன் அருள் அருணாச்சல வெட்டிடில் கட்டம வெட்டிடாதுனை உயிர் வெட்டிட அருள் புரிய அருணாச்சல வீடு விட்டீத்து உளவீடு புக்கு பெய உள் வீடு காட்டினை அருள் அருணாச்சல வெளி விட்டு செயல் வெறுத்திடாதும் அருள் பெண்ணிட்டு என்னை காருணாச்சல வேதாங்கத்தே வேரர விளங்கும் வேத பொருள் அருள் அருணாச்சல வேதனை வாழ்த்த வேதருள் வேதனை விடாதருள் அருணாச்சல அம்புவிலாலி போல் அன்புரு எனில் என்னை அன்பாக்கரை கருள் அருணாச்சல அருணை என்றென்னையார் அருள் கண்ணிப்பட்டேன் உள் அருள் வலை தப்புமோ அருணாச்சல சிந்தித்து அருள் பட சிலந்தி போல் கட்டி சிறையிட்டு உண்டு அருணாச்சல அன்போடு உன் நாமம் கே அன்பர்த்தம் அன்பருக்கு அன்பனாயிட அருள் அருணாச்சல என் போலும் தீனதையில் புறக்காத்து நீ என்னாலும் வாழ்தருள் அருணாச்சல என் குருகள் பதமில் சொற்கள் செவியும் மொழி கொட அருணாச்சலா பொறுமைய பூதர புல் சொல்லை நல் சொல்ல பொறுத்தருளிட்டமில் அருணாச்சல மாலை அளித்து அருணாச்சல ரமணையன் மாலை அணிதருள் அருணாச்சல மாலை அணிந்து அருணாச்சல ரமணையன் மாலை அணிதருள் அருணாச்சல மாலை அளித்து அருணாச்சல ரமணயன மாலையன அருள் அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சலம் வாழி அன்பர்களும் வாழி அக்ஷரமணமாலை வாழி அருணாச்சலம் வாழி அன்பர்களும் வாழி அக்ஷரமணமாலை வாழி அருணாச்சலம் வாழி அன்பர்களும் வாழி அக்ஷரமணமாலை வாழி வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாச வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சூதாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாச வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சூதாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே ஏழுலகம் ஜீவன் முக்தியில் பொங்கவே தயமாகும் இறைவனாகி எல்லாம் பொங்கவே ஏழுலகம் ஜீவன் முக்தி இன்பம் பொங்கவே தயமாகும் இறைவனாகி எல்லாம் பொங்கவே பாழ்மனம் மகிழ்ந்தை வாழ்வு பாழ்பட்டொழிகவே பாழ்மனம் மகிழ்ந்தை வாழ்வு பாழ்பட்டொழிகவே பரம சச்சிதானந்தாத்ம பாழ்பொழிகவே பரம சச்சிதானந்தாத்ம பாழ்பொழிகவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாஷ வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சூதாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாஷ வாழ்க வாழ்கவே தட்டிலாத நித்ய ஜீவ தத்துவமோகவே தட்டிலாத நித்ய ஜீவ தத்துவமோகவே தன்மயத்தில் சின்மயம் தழைத்து போகவே
தன்மயத்தில் சின்மயம் தழைத்து போலவே எட்டு திக்குமம் சசோகம் எதிரொலிக்கவே எட்டு திக்குமம் சசோகம் எதிரொலிக்கவே எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மை இறைவகேகவே எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மை இறைவகேகவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாஷ வாழ்க வாழ்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாஷ வாழ்க வாழ்கவே வாழ்க வாழ்கவே வாழ்க வாழ்கவே நமோ ரமண நமஸ்கார் Jayanti ji and her two students shared those beautiful bhajans with us. Thank you, Jayanti ji. Narayanan ji, can I please request you to initiate the Aarti and everyone can join in, please? Thank you. स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम भवानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा अरुणाचल श्री रमणाय नमः अरुणाचल श्री रमणाय नमः अरुणाचल श्री रमणाय नमः पंडम कदलीपழம் तैल गोसीरं नैवेद्यं समर्पयामि मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृतपुत्राभूषणं समर्पयामि नीराजनं समर्पयामि नीराजनासनं समर्पयामि हरि ओम हरि ओम हरि ओम समायतं नागवल्ली कलियुगं कर्पूरस्वर्णसमेतं प्रयुतां कर्पूरनीराजनं श्रीरमणमर्षिं समर्पयामि ओम नमो भगवते रमणाय नमः ओम नमो भगवते रमणाय नमः ओम नमो भगवते रमणाय नमः ओम नमो भगवते भैरवाय नमः ओम नमो भगवते ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम चिदानंदरूपं चिदानंद ओमो एकस्य देवा नीराजनं समर्पयामि नीराजनं नमास्मन्यं समर्पयामि हरि ओम प्राणाय स्वाहा वाणे स्वाहा व्याने स्वाहा उदाने स्वाहा समाने स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा अरुणाचल श्री रमणाय नमः अरुणाचल श्री रमणाय नमः अरुणाचल श्री रमणाय नमः दो भाग पुष्पम वेदा पुष्पवान प्रजावान पुष्पाटोगी चंद्रमा पुष्पम पुष्पम पुष्पम
ओम तत् ब्रह्मा ओम तत् वायु ओम तत् आत्मा ओम तत् सत्यम ओम तत् सर्वम ओम तत् गुरो नमः ओम तत् चंद्रभूते गुहाय ओम नमस्कार ओम इंद्रस्तम रुद्रस्तम विष्णुस्तम ब्रह्मस्तम प्रजापति ओम तदावो ज्योतिर्गो अमृतम ब्रह्म पुरो सर्वम न कर्मणां प्रजयागने विद्यादेके अमृतत्व मार्गो परेणाहं नीतं गुहाय विभ्राजते देवो विसन्ति वेदांत विज्ञान से विचदाता संन्यास योगात शुद्ध कर्मा ते ब्रह्मलोके तु परांतकाले परामुता परिमुच्यन्ति सर्वे अहं विभावं परमेश्वरभूतं कुंडलीकं पुरमध्य सगुंसतं तत्रावित्तकर्म कविनं विशोगस् तस्मिन् यतन्तत् विद्वादित्यं यो वेदान्तो स्वरपूर्वतो वेदान्तस्य प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य प्रथमैश्वरः मंत्रपुष्पम श्री रमण महर्षि की समर्पयामि ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु हरि ओम हरि ओम हरि ओम ज्ञानदान जन्मांतर प्रसाद तान प्रणतति ओम नमो भगवते श्री अरुणाचल श्री रमणाय नमः ओम नमो भगवते श्री कार्तिकाय नमः ओम नमो भगवते श्री मुरुगाय नमः ओम नमो भगवते श्री वल्ली देवाय नमः ओम नमो भगवते श्री सुब्रमण्याय नमः ओम नमो भगवते श्री स्वामीनाथाय नमः ओम नमो भगवते श्री दक्षिणामूर्तये नमः ओम नमो भगवते श्री नटराजरे नमः ओम नमो भगवते श्री भैरवरे नमः ओम नमो भगवते श्री नंदमहेश्वराय नमः ओम नमो भगवते श्री शिव पार्वतीये नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः हरि ओम हरि ओम हरि ओम Namo Ramana. This brings us to the conclusion of Advent Day celebrations at Ramana Kendra, Delhi. I thank all of you and may Bhagwan bless us all. Namo Ramana. Namo Ramana.